में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपन 2-2 मिनट किसी भी बीमारी का, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप सीखना। ये अंगूठा है, कैसा भी सिर में दर्द हो, यहाँ दबाने से सिर दर्द गारंटी से ठीक हो जाता है 2 मिनट में। ये अंगूठे को टोप से दबा दो ऐसे, 2 मिनट में कैसा भी सिर दर्द हो ठीक हो जाता है, तुरंत आराम। खाली पेट दबाओ तो सबसे अच्छा है। इसके बाद ये साइनस की, ये सारे पॉइंट है, ये साइनस के लिए, ये ऊपर वाले टॉप पॉइंट साइनस के लिए। नाक बहता हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस, ये सारे पॉइंट दबा देना साइनस के लिए। माइग्रेन के लिए, सिर में दर्द हो तो ये दबा देना, इससे ब्रेन की सारी दुर्बलताएं दूर होती हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये पॉइंट है, ये है आंखों के लिए। यहाँ धीरे धीरे दबाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। कई बार तो देखा कि बच्चों की एक पुतली इधर जाती है, एक इधर जाती है, ऐसे दबाने मात्र से दोनों आंखों की पुतलियां सामने हो जाती हैं। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। यहाँ कानों के लिए, कान से मवाद आना, कम सुनना, पर्दा फटा हुआ हो, धीरे धीरे प्रेस करना, जो बहरा आदमी उसको भी सुनने लग जाता है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये फेफड़ों के लिए, यहाँ दबाने से फेफड़ों संबंधी विकार दूर होते हैं, सर्दी, खांसी, दमा, कैसी भी बीमारी हो। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ हार्ट के लिए। कई बार तो हार्ट के अवरोध भी खुल जाते हैं यहाँ दबाने से, बहुत जबरदस्त पॉइंट है यहाँ, ये हार्ट के लिए। उसके बाद इसके नीचे यहाँ डायबिटीज के लिए, धीरे धीरे प्रेस करना रोज, सुबह सुबह 30 सेकंड से 2 मिनट तक रोज कर सकते हैं। इसके बाद ये हाथों के लिए, ये इधर, ये हाथों के लिए दबाना, इससे हाथों की बीमारियां दूर होंगी। उसके बाद ये इधर थायराइड के लिए, जो उभरा हुआ भाग है, ये दबाने से थायराइड अच्छी होती है। यहाँ ये थायराइड के लिए। बाद में यहाँ जो अंगुली मोड़ती है, लगती है, यहाँ ये किडनी के लिए पॉइंट है, ये इधर, यहाँ अंगूठे के नीचे दोनों हाथों में, ये किडनी के लिए। यहाँ दबाने से किडनी अच्छी होती है, किडनी का क्रिएटिनिन लेवल अच्छा हो जाता, होना चाहिए आधा से 1.5, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर ये मूत्र संबंधी बीमारी के लिए, किसी को भी हो, यहाँ से दबा लो बीच में से। फिर यह है इधर, ये सर्वाइकल पेन के लिए, जो अपनी पीछे की गर्दन का इधर दर्द होता है, ये स्पाइन कॉर्ड, ये पूरा यहाँ से ऐसे धीमे धीमे प्रेस कर दो, किसी से, पेन से, हाथ से, जैसे आपको लगे, यहाँ तक दबा दो। उसके बाद यहाँ ये गर्दन के लिए, कंधे के लिए, इतना जबरदस्त है, गर्दन कैसी भी जाम हो एकदम ठीक हो जाती है। कंधे के लिए, किसी का हाथ नहीं उठ रहा ऊपर, कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो, यहाँ से दबा दो मेरे भाई, साइड से, तुरंत 2 मिनट में कंधा ठीक हो जाता। 2 मिनट में, 2 मिनट लगती ही नहीं है। आदमी सोचता है ये हो कैसे गया। फिर ये बीच में पेट के लिए, फिर यहाँ ये स्टोमच के लिए, अमाशय के लिए। फिर सबसे बढ़िया पॉइंट है, किसी की बीपी लो हो जाए, उसको हाई करने के लिए ये बड़ी वाली अंगुली दबा देना। किसी की लो हो, उसको तो हाई करने के लिए दबा देना। किसी की हाई हो, 2 मिनट ये सेकंड, रिंग फिंगर, इसीलिए तो कहते हैं मगनी पे अंगूठी पहना दो। आजकल शादी होने पे लोगों को बीपी हो जाती है, यानी बीबी और बीपी का दोनों का थोड़ा थोड़ा चक्कर होता है। यहाँ से दबा दो, ये थोड़ा विनोद में, यहाँ से दबाने से बीपी ठीक हो जाती है, कैसी भी बीपी की प्रॉब्लम हो, यहाँ दबाने से। बाद में कैसी भी कमर की प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द हो, घुटने में दर्द हो, ये इसको दबा दो। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो, यहाँ से इस पूरी अंगुली को दबा दो, या पेन लेके ऐसे कर दो। कैसा भी शरीर में दर्द हो, तुरंत आराम मिल जाता, तुरंत। आगे बहुत सारे पॉइंट है। छोटे बच्चे पेशाब करते हो, यहाँ से दबा दो। बिस्तर में पेशाब करना पहले दिन बंद कर देते हैं, 2 खजूर खिला देना रात को और यहाँ से दबा देना। बिस्तर में जो बच्चे पेशाब करते हैं, उनका पेशाब करना पहले दिन बंद हो जाता है। और उसके बाद देखो ये इधर, ये प्रोस्टेट के लिए, फिर ये ओवरी, गर्भाशय के लिए, यूट्रेस के लिए, अलग अलग पॉइंट है ये। यूट्रेस के लिए, ओवरी के लिए, यहाँ ये प्रोस्टेट के लिए, ये पाइल्स, फिस्टुला, बवासीर के लिए, इधर ये अलग अलग पॉइंट है। इनको सबको दबा लेना चाहिए ऐसे, इसीलिए तो माता बहने कंगन पहनती, उनको कोई रोग ना हो। फिर पीछे, ये पीछे यहाँ कमर के लिए, यहाँ दबाने से कमर अच्छी हो जाती है, यहाँ से। फिर यहाँ अंदर की ओर दबाते, इसका दोनों का मिलता है, यहाँ दबाते तो यहाँ से सिर दर्द ठीक होता है। अंदर की ओर दबाते हैं तो यहाँ से नाभि ठीक होती है। फिर ये है अलग अलग, ये चैनल दबाने से कोहनी का दर्द हो, कलाई का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, एकदम अच्छा हो जाता है। बहुत जबरदस्त है। नहाते समय ऐसे यहाँ से रगड़ना चाहिए, थोड़ी मालिश करनी चाहिए। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और राइट हैंड में यहाँ लीवर के लिए,
किसी का भी लीवर गड़बड़ हो गया हो, यहाँ दबाओ लीवर अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे पॉइंट है। सुबह सुबह रोज दबाना और कम से कम एक शेयर जरूर करना आगे। सब लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो आराम से अपन दूसरों की सेवा कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। किसी का नाक रुक गया हो तो यहाँ से Most gracious, most merciful. Let me thank Lord Pearson for giving me the opportunity. For the last 10 years, I've had some discussions with him on TV channels as well as in this house. I don't agree with him, but I thank him for giving me the opportunity. And I just want to correct him on a few things. On Virgin Mary and Jesus Christ, I just wish that you can respect Prophet Muhammad as much as I respect Jesus Christ and Virgin Mary. And there are a number of things that I need to clarify, I think. First of all, this caliphate, the Lord Desai is very knowledgeable, and I don't want to disagree with you, but the Ottoman Empire, the Mughal Empire, the North African Empire, really the Caliphate did not exist after Sayyidina Omar, Osman and Ali, and that's it. And so this deliberate concept that is brought in as mischievous, Muslims can have 4 wives in the United Kingdom. Nonsense. British law is the superior law in this country. Nobody is allowed to have 4 wives. And really, you know, using this language that Muslims are breeding more children and they will take over. This is the same language that Nazis used against the Jewish communities before Second World War. Deliberately done when there is hatred against the Muslim in terms of the birth rate. So even killing somebody who leaves their religion, in this country, nobody can do anything above law. I'm a Muslim, I'm British. My law is the British law, which is for everyone. And so to be mischievous and say that these Muslims have some other laws in this country, they will breed children, they will take over this country, is a deliberate attempt to frighten people. Just on the secular rule that Muslims are told after hijrah to leave and go. To be frank, I hosted Christian communities from Ethiopia last night here because of the human rights situation there. Abyssinia was a place where the Prophet Muhammad, peace be upon him, asked his companions to go and live under a Christian ruler because he allowed them to live in peace, just as the majority, 20-30 million of us who are living here in the United Kingdom, in Europe and in the United States. And I know that if you look at some of the figures, in America, Internal Revenue Services have quoted saying $200 million spent by Islamophobia industry last year. Most are designated as hate crime groups by Southern Poverty Law Center in the United States. So I think we need to put things into context. I don't have to preach anyone what the Holy Bible, which I respect, the books of Exodus, Deuteronomy, Joshua, and both books of Kings talk about slaughter, genocide. And if these fanatics, whether they're ISIS or Daesh, if they then picked up the Bible and said, this is why they invaded Iraq and this is why they killed Muslims because this is the teaching of the Bible, it's complete nonsense. Because for me, the religions, whether it is the Hindu religion, the Sikh, the Buddhist religion, one of the most peaceful religions on earth, you see what's happening in Burma, in Myanmar, to Rohingya communities. It's the individuals who abuse the text, whether it is Muslims, Jewish, Christian, whichever religion, who abuse it for their own violent and political purposes. So this is a great country, and frankly, we don't need Islamophobes, because every time when you see people from UK, Britain First and others who create this hatred, there are attacks
on Muslim communities, on European communities, on ethnic minority communities that go up. And I'd like the minister, when she's replying, she could tell us the figures in terms of, you know, when they use this bad language, how much hatred and hate crime goes up. Only last week, a Muslim woman was refused in McDonald's to be served because she was wearing hijab. Visible Muslims with beards, or even Sikh communities with turbans, how they are attacked. People who speak European language, how they are abused on buses and everything. We've seen the videos. So I think in a wonderful place, in this democratic place, we should be talking about the great contribution communities have made. When my father came here, after the Blitz, this country's industry had been disintegrated. If you look at the steel industries, the textile industries, the infrastructure, the health service, and the transport industry, ethnic minorities, Muslims, Hindus, Sikhs, from Europe and from Commonwealth, they came here and made this country the Great Britain it is today. And during the Labour government, we had the third largest economy. Proudly, I used to go around the world telling people, and today even, fifth largest economy in the world is Britain, and all of us together, we have done, yes, we have criminals. But if we start pointing finger at all the Muslims first, then maybe the Jewish communities after, and then maybe the Sikh communities after that. And then we might say, well, all these colored people or people with color or different people that don't look like us, don't have the green eyes like us, they are the ones who are responsible for our social deprivation, unemployment, and the economic crisis that we have. Then that's what the Nazis did. That's what Hitler's people did. My lords, I just hope that we come to our senses and talk about the great contribution. This country, this is a great country. Muslims, non-Muslims, all of us stand together. This is a great country. So terrorists, those who murdered 37 of our citizens, my sympathies, and thank you very much. My time's up. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Can you tell me why you are here today? You are Jewish, but you stay with us Palestinians here. Can you tell me why? Yes, because we are Jewish, that's exactly why we're here today. We as Jews, we are opposed to the whole concept of Zionism. We want Zionism to cease to exist, and then there will be peace once more in the Holy Land, like before there was Zionism. And we are here today to demonstrate against this war criminal who is getting impunity for war crimes. And also the JNF, which is a land robbery against the Palestinian people in the Holy Land, in Palestine. We as Jews, we feel obliged to stand up and tell everyone, Judaism is not Zionism. Judaism is for peace, against violence, against occupation, against land grabbing, against war crimes, against everything else. That's what we are here today for. So you don't say that the country is Israel. You say that the country is the Holy Palestine. Yes, it's the Holy Palestine, Holy Land, which is called Palestine. We do not recognize the state of Israel as being legitimate, whether in political humanitarian grounds, and as well as our Jewish faith grounds, and that the grounds of our Jewish faith, we will not recognize, we will never recognize its legitimacy.